Hello students, I'm present here with the additional questions related to chapter Chaturdasha Patha Pratipadam Sanskrita along with the answers. I promise you that I'm going to give you extra questions with the answers. So पैसे से आपको मिल जाए हेल्प मिलेगा कि अगर एडिशनल क्वेश्चंस आता है तो क्या आएगा और what will the answers. So keep on watching. The first thing is here I want to discuss with you. से उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखता. मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि कहाँ से कहाँ तक बट टेक ऑल पैसेज ऑल डायलॉग्स हियर. सो उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखता. प्रतीक्षालयः. सो विमानतलस्य प्रतीक्षालय विल बी द आंसर and should be underlined. मैंने यहाँ पे highlight कर दिया आंसर but you have to write in complete sentence. समीपे require षष्ठी. So भवत्याः is in षष्ठी विभक्ति, so भवत्याः समीपे सुभाषित संग्रहं दृष्ट्वा मया चिन्तितम्. Third number is अवगतम. It is in passive. So मया अवगतम. Already ये passage में रहेगा. So you can take help of that and then you can write the answer. So मया अवगतम. अहम. Fourth number is अहम स्नातकः. तो वाणिज्य शाखायाः स्नातकः. तो आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट. तो यहाँ पे आएगा अहम वाणिज्य शाखायाः स्नातकः. नेक्स्ट वन फिफ्थ वन इज कौटिल्यम अर्थशास्त्रम डैश आदीनां ग्रंथानाम अध्ययनम सहायकरम भवेत्. इट मीन्स याज्ञवल्क्य स्मृति. सो कौटिल्य अर्थशास्त्रम याज्ञवल्क्य स्मृति आदीनां ग्रंथानाम अध्ययनम सहायकरम भवेत्. इट विल द आंसर ऑफ दिस फिफ्थ नंबर. सिक्स नंबर इज पृष्ठतः डैश युवकाः गोष्ठीषु रताः. सो it becomes पृष्ठतः युवका. युवका is plural form, so केचन will be the word here. So पृष्ठतः केचन युवकाः गोष्ठीषु रता. इसका आंसर आएगा पृष्ठतः केचन युवकाः गोष्ठीषु रता. सेवेंथ नंबर है भवान अपि परिषद परिषद निमित्तम प्रस्थित. So here was one mistake, so that is corrected now. भवान अपि परिषद निमित्तम डैश प्रस्थित विदेशम प्रस्थित will be the answer. एट नंबर इज छात्राः संस्कृतं पठितुं शक्नुवन्ति. बिकॉज छात्रा इज सब्जेक्ट इज विच इज इन प्लूरल फॉर्म. बहुवचन में है तो शक्नुवन्ति विल बी द आंसर. एते सर्वे अपि डैश सहभागिनः. तो परिषदि सहभागिनः सप्तमी एक वचन. सो दीज आर द आंसर ऑफ उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखता. अगेन सी केयरफुली द क्वेश्चन. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखता. वाक्यम पुनर्लिखता मीन्स रीराइट द सेंटेंस. ये नहीं कि आपने वर्ड पिकअप किया और जिस वर्ड ही लिखा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एडिशनल क्वेश्चंस पूर्ण वाक्येन उत्तरद. एष संवादः कुत्र अभवत्. where these dialogues happen took place. So कुत्र is a question word, so answer आएगा एषः संवाद विमानतलस्य प्रतीक्षालये अभवत्. इट रिक्वायर्स सप्तमी. सो आप देख सकते हो यहाँ पे सप्तमी में. सेकेंड नंबर इज महोदय कस्याः शाखायाः स्नातक. सो कस्याः शाखाया तो वाणिज्य शाखाया. ऐड करके लिखो वाणिज्य शाखायाः स्नातक. करेक्ट. सो समास इट विल बी समास वर्ड. थर्ड इज महोदय केन रूपेण कार्यं करोति. केन तो विधि विमर्शक रूपेण. दैट इज अबाउट द जेंटलमैन. सो महोदय विधि विमर्शक रूपेण कार्यं करोति. फोर्थ नंबर इज एषा गद्यांश कस्मात् पाठ. दैट इज एडिशनल क्वेश्चन. इट कैन बी आस्क्ड अबाउट एनी चैप्टर्स. सो द आंसर विल बी लाइक दिस वे. यू हैव टू राइट इन कंप्लीट सेंटेंस. एषा गद्यांश प्रतिपदम संस्कृतम. ये आइदर अंडरलाइन करो और इन्वर्टेड कॉमा में डाल के लिखो. एंड अस्मात् पाठात् उद्धृत. Sometimes you are not able to write complete answer and you are fear of spelling mistakes, so you can write like एषा गद्यांश प्रतिपदम संस्कृतम पाठात् उद्धृत. अस्मात् नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा. ये ऑल क्वेश्चंस दिए, सिर्फ आपको ये लिखना है. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर पुस्तकस्य मुखपृष्ठे किं शीर्षकं वर्तते. सो द आंसर विल बी पुस्तकस्य मुखपृष्ठे संस्कृत सूक्ति संग्रह इति शीर्षकं वर्तते. तो किम क्वेश्चन है, इसको रिप्लेस करेगा संस्कृत सूक्ति संग्रह. दैट इज द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक. लास्ट वन इज कस्मात संस्कृत पुस्तकम दर्शयति. कहाँ से संस्कृत पुस्तक दिखाता है. सो इट्स आंसर विल बी स्यूतात फ्रॉम बैग. He shows textbook Sanskrit book from bag. So these are additional questions along with answers Purna Vakyena. Now we proceed to next question.
I have taken all Sandhi words which are given in these textbooks together. So Sandhis are, you can see here, Sandhi, Sandhi Vigraham Kuruta might be, or Pur Padam Uttar Padam Likhata, ये question आ सकता है. तो first one is Janairapi. So Janaihi Adhikapi. Adhunaiva. So Adhuna Adhik Eva. Tathapi is Tatha Adhikapi. इत्यादिषु is इति अधिक आदिषु. जनेरपि is जनैहि अधिक अपि. पुनः एक वारम is पुनः अधिक एक वारम. तदपि is तत् अधिक अपि. अधुनैव अधुना अधिक एव. तद अनुसृत्य is तत् अधिक अनुसृत्य. किमपि is किम अधिक अपि. इत्येतानि is इति अधिक एतानि. किम अधिक अपि. किमपि is किम अधिक अपि. इत्येतानि is इति अधिक एतानि. 11th number. 12th number you can see भवान अपि is भवान अधिक अपि. 13th number is त्रयोदश सर्वे अपि तो सर्वे अधिक अपि. 14th चतुर्दश is नमस्ते अधिक नमस्ते तो नमः अधिक ते. 15th is aham api. Aham api means aham adhik api. Then 16th number is bhavet adhik iti. Bhavet iti. Bhavet adhik iti. Bhavet adhik iti. 17th number is 17वां number है नैव न अधिक एव. 18th अष्टादश सत्यमेव तो सत्यम अधिक एव. 19th is विदेशेष्वपि तो विदेशेषु अधिक अपि. 20th is kasminnapi तो kasmin अधिक अपि. This is व्यंजन type संधि. And 19th is विश्व संस्कृत परिषद निमित्तम. So विश्व संस्कृत परिषद the halant plus nimittam. So these are the sandhi words. Now come to proceed. We will proceed to next question. Samas word in this chapter, which can be asked. So first is Subhashitanam Sangraha. That is Subhashitanam Sangraha is Shashti Tatpurusha Samas. That meaning is the meaning is collection of verses. Karyarataha. Karyarata is Karyarataha. Samas name is Sapmi Tatpurusha Samas. Engage in the work or working. Next, third number is Ramayanam cha, Mahabharatam cha, Kiratarjuniyam cha, Raghuvansham cha, Itarita Dvand Samas, because you can see cha, all words are in Prathama Vibhakti, and after each word there is cha. So it is Itarita Dvand Samas. Fourth number is Kavyasya Madhyam, means Kavya Madhyam. So Tena Kavya Madhyamena, Shashti Tatpurusha Samas, Kavyasya Shashti में तो षष्ठी तत्पुरुष समास through the medium of poetic. And the बहुराष्ट्रीय संस्था is बहुराष्ट्रीय संस्था. संस्था का विशेषण है बहुराष्ट्रीय. And तस्याम so बहुराष्ट्रीय संस्थायाम. So it is कर्मधारय समास type समास. Now we'll go to next type of question. Twant 11 tumant abhay forms which are used in this chapter. Twant abhay form is drishtva, one form. 11th form is anusritya, anu adhik sru, उपगम्य उपधिगम. आगत्य आधिगम. अधिकृत्य अधि अधिक्रु. And adhitya, that is adhi adhik e. And tumant अव्यय forms are पठितुम पठ अधिक तुमुन. And prastutum is pra अधिक stu अधिक tumun pratyay. So these are the forms in decline means twan 11 tumant अव्यय forms which are used in this chapter. Next, uchitam karanam chitta vakyam punarlikhata. So one sentence I have taken only. So the sentence is here. Samiraha Samira Videsham Prasthita Yataha ऐसा options you can see. विश्व संस्कृत परिषदि सह निमंत्रितः और सह मित्रैः सह विदेश दर्शनम कर्तुम इच्छति. So which one is correct? He is invited. He has been invited in World Sanskrit Conference, or he wants to meet his friend in abroad. So first answer correct. Answer should be like this way. Samira Videsham Prasthita Yata Vishwa Sanskrit Parishadi Sah Nimandrita. So it is Uchitam Karanam Chita Vakyam Punarlikata. Next question. Additional Uchitam Paryam Chita Vakyam Punarlikata. So the questions are Kechan Bharat Munehe dash Adhyanam Kurvanti. Options are Natya Shastrasya Vyakana Shastrasya. So answer is Natya Shastrasya Adhyanam Kurvanti. That is written. It should be written like this way. ये answer मैंने दिया है तो you can check here how to write answer.
सेकेंड इज अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनम शाला और शालायाम कृतम. So it will be in Saptami. So अस्माभिः संस्कृतस्य अध्ययनम शालायाम कृतम. And the last one is वयं वृत्त्यर्थम कार्यरताः श्याम और श्यामा. So answer क्या आएगा इसका? Just let me correct few things are there that should be added. Uh, so answer will be वयं वृत्त्यर्थम कार्यरताः श्याम. श्याम श्याम श्यामा. So it is विधिलिंग लकार form. Correct? So these are the answers of Uchitam Paryam Chita Vakyam Punarlikhata. Besides these questions, now Visheshan Visheshyam, some are taken in from the exercise, some additional questions are also given here. Bahavaha is Visheshan adjective and its Visheshyam is Shlokaha. Sugamaha Vishaya Pravesha. Eka Mahila. Fourth is Shastra Vishakan Granthan. Sahayikaram Jnanam Utsukaha Janaha. Sixth number. Seventh number is Drishtanta Sahitani Mool Tatvani. Eighth number is Khanditam Sanskritadhyanam. Ninth is Sahayakaram Adhyanam. Tenth is Rataha Yuvakaha. 11th is Shrutah Sandarbha. 12th is Likhitaha Granthaha. And 13th is Uttama Abhyasaha. So these are wishes and wishes. You can see how to identify. स्पेशली आप नाउन को अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपने उसका जेंडर देख लिया, विभक्ति देख लिया, और मोस्टली ये प्रथमा में ही होता है, और उसका विभक्त नंबर्स आपने देख लिया, वचन देख लिया, तो उसी वचन और जेंडर में विशेष्य भी होगा. फॉर एग्जाम्पल श्लोका इज इन प्लूरल फॉर्म ऑफ मैस्कुलाइन प्रथमा, सो वहवा इज ऑल्सो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैस्कुलाइन प्रथमा. सो बहु बहु बहवा ये फॉर्म आता है. सो अकॉर्डिंगली, सो दीज आर विशेषण बेस्ड क्वेश्चन. Next question is additional question. It is not given in the text this chapter, but I have given these questions and answers are not written. It is expected that you will write answer yourself and for true or false. So question is Vakyam punarlikhitva satyam asatyam iti likhata. Rewrite the sentence and state whether it is true or false. Satyam is true and false means asatyam. कि sentence correct है या नहीं है. So first sentence is Mahodaya Sukti Sudha Nam Pustakam Patati. That gentle lady is reading a book named Sukti Sudha. Second is Mahodaya Vidhi Vimarshak Rupena Karyam Karoti. So that gentle lady is working as legal advisor. Third is Mahodaya Vidhi Vimarshak Rupena Karyam Karoti. Means that gentleman is working as a legal advisor. Fourth is Ashtadhyayi iti Natya Shastra Vishaka Grantha. Means Ashtadhyayi is about Natya Shastra, means dramas based textbook. Fifth is Prasada Rasayan Shastra se Chhatra. Prasad is the student of chemistry. Sixth number is संस्कृतस्य ज्ञानम आधुनिक भारतीय भाषाणां विश्लेषणे अतीव सहायकरं भवति. Means the knowledge of Sanskrit become more helpful, useful in analyzing Indian ancient modern Indian languages. Seventh number is Pars Parsanivedanam. Seventh is Parsanivedanam iti Linayaha Vyavasaya. Means Lina is working as a Parsanivedanam means backstage anchoring. And Ganit Jnanam Asmat Kute Vishesharhata Bhavati. The knowledge of mathematics become more special quality in whichever field we works according to this chapter. So आप ये देखो और आंसर खुद कोशिश करो लिखने का. We'll proceed to next question. Now this question taken from this textbook, this chapter, but this type of questions cannot be asked as per board rule from dialogue based questions. Dialogue में से लिया ही नहीं जा सकता. फिर भी मैंने आपको दे दिया कि बाई चांस पूछता है तो आपका आंसर्स क्या होगा. सो कह कम वदति, हु सेड टू हुम. फर्स्ट इज अस्य पुस्तकस्य नाम मम. अस्य पुस्तकस्य मम कार्यक्षेत्रेण सह सम्बन्धः अस्ति. दिस book is related to my work field. Second is अनेन काव्यमाध्यमेन विषय प्रवेश सुगमः भवति. By this poetic medium, the understanding the subject, grasping of the subject become easier. Third is अहं वाणिज्य शाखायाः स्नातकः. अहं वाणिज्य शाखायाः स्नातकः. So the third is अहं वाणिज्य शाखायाः स्नातकः. I am the commerce graduate. Uh,
then fourth is aham Sanskrit granthanam adhyayane yatnam karomi. I am trying to learn Sanskrit treatises, Sanskrit books. Param Kidrishi Esha Visva Sanskrit Parishad means what, but what is this World Sanskrit Conference? Sixth is Aham Rasayan Shastrasya Chhatraha. Again, यहाँ पे spelling mistake, so let me correct that. Rasayan Shastrasya Chhatraha. So all answers are written here. First is Mahodaya, Mahodayam Vadati. Second is Mahodaya, Mahodayam Vadati. Third is Mahodaya, Mahodayam Vadati. जिसने कहा वो प्रथमा में और जिसने सुना जिसको कहा गया वो द्वितीया में होना चाहिए। और इसका भी सिंपल वे है कि उसमें द्वितीया में डॉट ऐड कर दो। तो महोदया है तो महोदयाम, महोदय है तो महोदयम, महोदय समीरम वदति फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर इज प्रसाद महोदयम वदति. So these are the answers. Now we go to next question. I have taken one chronological or sentences also here, chronological four sentences. Kramena yojata, rearrange the sentence according to uh, incident, according to dialogue. First is Mahajanasya Mahilam Prichya. Mahajanasya Mahilam Prichya means Mahajan, that gentleman is asking to that lady. Second is Ekasyaha Mohodyayaha Agmanam means arrival of one lady. Third is Mahilayaha Pustak Patnam, the reading of textbook of that lady, gentle lady. Jananam Yatrayaha Arambhartam Pratiksha means people, the waiting of the people for beginning their journey. So ये order है, इसे ये sentences है, इसको rearrange करना है तो ये answers है. You can also try yourself. And the last question is समास दैट ऑलरेडी आई शोड यू, बट यहाँ पे मैंने इस तरह से दिखाया. सो ऐसे ही आंसर होना चाहिए. आप ऑलमोस्ट मैंने आपको दिखा दिया, बट वंस अगेन प्रतीक्षालय रूम फॉर वेटिंग. आलय मीन्स रूम होता है, एंड आलय व्हेन इट इज टेकन देन द वर्ड शुड बी इन चतुर्थी. सो प्रतीक्षाए आलय चतुर्थी तत्पुरुष समास. निद्रा मग्न व्हेन मग्न विल कम दैट टेक सप्तमी विभक्ति. तो निद्राया मग्न एंग्रोस इन स्लीप. So Nidrayam Magna Sapmi Tatpurusha Samas. Third is Samipastha, standing nearby. So Samipe Tishtati. So Tishtati is the symbol of Uppatatpurusha Samas. Subhashit Sangraha, the collection of verses. तो सुभाषिता नाम संग्रह, कलेक्शन, संग्रह मीन्स कलेक्शन किसका, तो सुभाषित का, तो गुड सेइंग्स और श्लोका. तो षष्ठी, तो षष्ठी तत्पुरुष समास. महाकाव्यम, काव्यम कैसा मीन्स पोइट्री, विच वॉट टाइप ऑफ पोइट्री, तो एपिक पोइट्री. So epic is Visheshan Mahat Kavyam and Kavyam is in neuter gender, so it becomes Mahat Kavyam. Then Bharatah Bharat Muni says named Bharat. So इसको ब्रेक करेंगे तो क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है एक कॉमन नाउन है, तो भरतः नाम मुनि, नाम बीच में आ गया. सो दिस इज द सिंबल ऑफ कर्मधारय समास. महत महान, महाविद्यालय इज ऑल्सो कॉलेज विच इज कॉल्ड कॉलेज. सो महान विद्यालय, विद्यालय मैस्कुलिन है तो ये भी मैस्कुलिन हो गया. काव्यम न्यूटर था तो महत न्यूटर हो गया था. अभी विशेष अर्हता तो स्पेशल क्वालिफिकेशन. तो विशेषा अर्हता, अर्हता का विशेषण है विशेषा, so it is also Karmdharaya Samas. So these are additional questions of these chapters. I hope it is helpful for you. It become helpful for you for understanding complete dialogues and this chapter. So keep on practicing, and if you require more help, you can take some message. And very soon I'm going to upload last video, means last chapter's video, that is Manavta Dharma. So um, again and again I'm telling you, do writing practice, do revision for tasks, especially tables, sentences and nibandh, etc. So thank you for watching.